देखे क्रिकेट टीवी जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें जहां जोश भी है जहां होश भी है जहां क्रिकेट है आओ देखे क्रिकेट टीवी। Rajasthan Royals walked into Hyderabad unbeaten, 4 wins, best net run rate in the league, looking like a team that had already written the script for this season. Then two debutants tore that script apart. Welcome to Cricket TV. I'm Hetvi Patel, and we have Nikhil Morsawala, Narayan Pasari, and Karan, who will dissect the night. SRH reminded everyone about the good side of the inconsistency. Nikhil sir, let's start with you. On the toss, RR selected to bowl first. You have maintained that against teams like SRH, RCB, who can post a massive total, you should never really opt to bowl first. I think it's like it became a trend for most of the captains to get into this due factor and second bowling second is a problem and chasing it easier. You know, there's a standard cliche thinking process that is happening that you saw even in the previous match when Mumbai put an RCB to bat after winning the toss. I think that's probably if once the historical statistics start coming out and you start seeing that that's not working, thinking might change. But I think it's important for here. I think it was a more equally balanced batting aggression as opposed to say a Mumbai and RCB. You know that RCB was more dominant in the batting side, and Mumbai was more dominant on the bowling side. Here you would see that it's like almost you have for one Vaibhav, you had Abhishek, and for a Yashasvi, you had somebody here. So it was like man to man, head to head, the batting was more or less equal in terms of statistics, in terms of talent. So I think Rajasthan putting in Hyderabad to bat first, or Hyderabad putting in Rajasthan to bat first, is a sort of 19-20 का सवाल. What I think a little inconsistent है speaking about Hyderabad कि जब आपने इसके पहले की मैच में क्लासन का बैटिंग देखा कितना स्लो था, उसने कुछ आई थिंक 26 बॉल में 38 रन बनाए, ऐसा कुछ किया था. और इस बार उसका बैटिंग आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क हो गया. ईशान किशन भी एक गेम खेलते हैं, फिर एक गेम नहीं खेलते हैं, फिर एक गेम खेलते हैं, फिर एक गेम नहीं खेलते. तो जहाँ कंसिस्टेंसी लैकिंग, ऐसा यही प्रॉब्लम है. कल अभिषेक नहीं खेले, उनको खेलना चाहिए था पहले ही बॉल में, बिना सोचे बिना समझे जैसे आके आपने बैट घुमाया और पहले ही गेंद में आप, वो भी जोफ्रा आर्चर के सामने, जो आप जानते हो वर्ल्ड क्लास बॉलर है. तो ये जो एक स्ट्रीक है ना इनके सारे खिलाड़ियों में, इज वेयर आई थिंक दे आर गोइंग रॉन्ग. They're a very strong team otherwise. So I think on the batting side, Klassen was outstanding yesterday. I was watching his batting, was brilliant. And of course, Ishan Kishan ka to sawal hi nahi. I mean, the way he was canting these bowlers all over the ground, he was brilliant. And I think that partnership actually took Hyderabad, in spite of that first ball loss to Jofra. Aisaraj was able to put up, which I always say was not a defendable score. 216 is still not defendable, but that two X factors, Saqib Hussain and Praful Hingen, we'll come to that part after the other two experts talk about their take on SRH's batting. But I think the batting on SRH side was good. 216 to reach with Abhishek going on the first ball. Acha performance, not enough against the Rajasthan Royals. As we would have thought at the interval. Interval के बाद क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन जब हाफवे मार्क पे लगा कि यार 216 तो not at par, short by about 20-30 runs, and largely more because of I think Abhishek's wicket going in the first ball. That's my take on the SRH batting, and I think they need to be more consistent. Their players have to be, so if you compare it to the other teams, you will see that standard consistent batting performance in Kohli or Rohit Sharma or Padikkal or Patidar or Gaikwad, they all have been consistently playing. Here it's completely inconsistent. That's what they have now look at and improve upon, because I think bowling is coming together. We'll come to that. Karan, let's bring you in. What do you think? Did you miss Abhishek Sharma playing? Yeah, Yes.
Yeah, even I'll agree with Nikhil sir that if you look into the previous matches, there's a clear inconsistency visible both in batting and bowling. The good thing over here, Ishan Kishan did as a captain is, yeah, he played a wonderful knock of a captain. Apart from that, bringing in two new bowlers, showing trust on them in such a crucial match against the table toppers, and that worked out. So yeah, the credit over here goes to Ishan Kishan's captaincy. Yeah, well, bowling was totally unexpected and wonderful. Yeah, Welcome to that. yeah, Klassen, wonderful knock. I thought, yeah, I really enjoyed it as a fan. Narayan sir. So, apart from what Nikhil and Karan said, I would like to add that two other batters. One is Nitesh Reddy. He scored 28 of just 13 balls with four sixes. Actually, he hit four sixes in that in knock, and the wicket keeper Salil Arora. So he also hit 24 of 13 balls. So they added that the middle order का नीचे का portion है वो अच्छा करके this they could reach to this total of 200 and 16. तो ये भी अच्छा था कि otherwise क्या होता है कि SRH का अगर टॉप ऑर्डर निकल जाता है नहीं होता है कुछ भी तो नीचे वाले फिर और भी तकलीफ में आ जाते हैं वो ज्यादा उन लोग नहीं करते. This is what I wanted to add to the batting of SRH actually. एंड जैसे निखिल ने कहा कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं था टॉस जीतने के बाद लेकिन मेरे को लगता है कि आरआर शुड हैव नॉट पुट एसआरएच टू बैट फर्स्ट दे शुड हैव बैटेड फर्स्ट एक्चुअली ऑन दैट पिच and put up and they know how the batters are there क्योंकि we'll take up about the two new debut players further on in the in our this recording and Hetvi. Yes, everybody tried. Archer bowled really well, but they could not contain it at the end, like you said. कि end में नीतीश रेड्डी और सलील अरोरा को काफी रन दे दिए. Archer, Bishnoi, Sandeep, they all had their moments, but they could not contain them at the end. The real story of this match, the two debutants we all have been itching to speak about. They don't have any IPL caps. They between two of them they took 8 wickets. Karan, let's start with you. What do you think happened? सबका एक दिन होता है and their debut was last match, and it went wonderful. Such young talent, and about Hussein, the way he bowls, he plays he uses mainly of his mind games. Egg ball, apart from his bowling action, that's kind of new. He uses mind games because I noticed that he mainly puts fast bowling, but at any random point of the over, he suddenly puts a slow in swing ball that goes directly to the wicket, and that's very important. Article if you look into the people who are taking wickets, Bumrah, the almost like the legend of bowlers right now in this for this generation, he's not able to take wickets. That's the reason is innovation. The people have to come up with new innovation in bowling style. सिर्फ यॉर्कर डाल डाल के people are knowing his style now. Yes, Nikhil sir. Yes, I think that one of those things that happen when you have a bad day at the office. I think I wouldn't say that the bowling was awesome or unplayable, and it was good bowling, no doubt. You can't take away anything from the skill of the bowler, but at the same time, I think the wrong choice, shot selection, bad luck, all these come into play. Whether a score line of 4 wickets for 2 runs or whatever it was. Thankfully, I didn't watch that part. I get only from your WhatsApp message that is happening, and then I shut off my phone and I don't want to see it. so I think I didn't see the action, but I can sense that this was something that probably more than one off, and then going up to 159 after being losing half the side for such a short score also speaks about a certain character of those two cricketers, those two
Ravindra Jadeja and Donovan Ferreira, who sort of held things together. Because the run rate is critical here. तो जब मैं सोच रहा था कि 10वें ओवर के बाद मैंने स्कोर देखा तो अब ये क्या करेंगे क्या ये लोग, तो इनका आपने देखा होगा रवैया ये नहीं था कि हमको मैच जीतना है, मैच की कोशिश करेंगे, लेकिन जितने ज्यादा रन बनाएंगे, जितना मार्जिन ऑफ डिफीट कम हो जाएगा, उतना एनआरआर आरआर के लिए अच्छा होगा। क्योंकि वो फिर जब एनआरआर के ऊपर मारामारी होगी कि करेक्ट। टॉप में कौन आता है, तब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि उस दिन एमआई के लिए रदरफोर्ड ने इतने सिक्सेस मार के 18 रन का डेफिसिट कर दिया, तो एक एनआरआर पे थोड़ा अच्छा इफेक्ट आया। सेम थिंग yesterday happened. It happened that because of these two gentlemen who were able to put together a decent stand and take them to a non-embarrassing score, I would say, is something that was good. It showed a sense of uh, of the match awareness and that not giving up. अब तो खत्म हो, क्या करना है, मारो मारो गोली चलो भागो, not that sort of attitude, but a long term thinking, a long term vision. But full marks, I think, to Hyderabad for like pulling A and coming in Saqib Hassan. This is where captaincy and management's thinking comes in, and हमें इसके साथ इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि जब आप टूर्नामेंट के टॉप टीम के साथ खेलने जा रहे हैं, नंबर 1 रैंक टीम है, तभी आपके ये सोचते हो कि इधर मेरा बेस्ट तेरे को निकल जाओ, क्यों नए आदमी को क्यों एक्सपोज करो, गलत होगा। लेकिन जब आप ये रिस्क लेते हैं और एक एक्स फैक्टर आ जाता है, ढेंगे का फर्स्ट मैच, साकिब का फर्स्ट मैच, वो लोग और भी कोई गेम खेले नहीं आज तक। इनका मैं रिकॉर्ड देख रहा था, सब 0-0-0 है, कोई भी दिख नहीं रहा है कहीं भी उनका परफॉर्मेंस। तो कुछ भी नहीं था सामने वाले को जज करने के लिए कि ये दोनों बंदे कैसे खेलेंगे, और एक्स फैक्टर आया, but the gamble paid off, and that was fantastic. I think we have to give credit to the Hyderabad management for that, and of course the batting was from Ishan Kishan, changed that Hyderabad innings. So I think all in all, full marks to the Hyderabad management. Nothing to take away from the bowlers, but I think there was a certain element of bad luck for RR. Praise for RR because they could reach 159 in spite of the score. So one-sided match, but you had to watch RR playing for that honor of not losing with a very big margin. Narayan sir. So the match belonged to both the new debutant bowlers, Praful Hinge and Saqib Hussain. No doubt about that, actually. In fact, if you see, Hussain was not in the first playing 11. Actually, he came as an impact player after the first innings was done. Travis Head के बदले में उसको, and I agree with Nikhil that Ishan Kishan took that courage of bowling the first 2 overs from the debutants. Actually, वो जब usually नहीं होता है, debutants को first over देते ही नहीं है कभी भी, second over भी देते नहीं है, बाद में देते हैं. So this is something which we have to really praise Ishan Kishan for that actually. और जस्ट नाउ जैसे फरेरा और जडेजा के बारे में बोलना चाहूंगा कि फरेरा का स्ट्राइक रेट 157 था फॉर हिज 69 रन्स और जडेजा का स्ट्राइक रेट 140 था. सो अ रीजनेबल स्ट्राइक रेट, बट एक्चुअली उन्होंने 118 रन भी बनाए. जब 5 विकेट 9 रन पे गिर जाती है, उसके बाद में 118 का रन, तो उनका भी एक हेरोइक एफर्ट एक्चुअली, वो भी अपने को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए. बट द टारगेट वाज ऑलवेज आउट ऑफ देयर रीच, तो वो तो नहीं करने लायक था. और जैसे निखिल ने कहा कि उन्होंने कभी चेस करने की कोशिश भी नहीं करी एक्चुअली देखा जाए तो. सो एंड एक्चुअली ये भी है कि सिंस दोनों डेब्यू बॉलर्स हैं, आरआर के प्लेयर्स ने कभी उनको खेला नहीं है पहले, एटलीस्ट इन द आईपीएल. अदरवाइज कुछ खेला तो आइडिया नहीं है, लेकिन तो उनको भी ध्यान नहीं था कि किस तरह से बॉलिंग करें. एंड दे यूज द पिच इफेक्टिवली एंड दे आर बोथ नोन टू बी सॉलिड पेस बॉलर्स. और उनके, अगर मैं बाद में चर्चा करूंगा उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, जो लोग ने नहीं देखा है मैच और नहीं सुना है उनके बारे में, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा. हेतवी. Yes. So, I mean, I think for even if it's one-off or even if nobody has played them before, to have a debut like this is something to cherish. Something Hinge said during he was the
Post match. The player of the match. Player of the And match, in yeah. the interview, he said, "I had written somewhere that I would take 4 or 5 wickets on debut. And I wanted to bowl a bouncer to Suryavanshi and get him out. And that happened for him. Manifestation worked for him. So magic happens at times like this when you're lucky. So yeah. Going forward, Nikhil sir, how do you think these two teams will, change their mindset or change their game plan? I think again, I still doubt SRH's ability to uh, to to be consistent. उनका ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है मुझे नहीं लगता है चेंज होगा। तो अभी टॉप 4 में आ चुके हैं, इस वक्त टॉप 4 में, लेकिन जस्ट हैंगिंग बाय थ्रेड। आई थिंक another two players are teams are bringing down their neck to jump into that position. RR, I think, good, as I mentioned in the pre-game show yesterday also, कि अगर किसी कोई भी गेम हारनी है तो ये हारिए आप, इसमें हार जानी, आगे चल के नहीं हार सकते, क्योंकि आप एक ऐसी टीम को बीट कर रहे हो जो शायद टॉप 4 में आएगा नहीं आगे चल के, तो उससे हारने में कोई हर्ज नहीं। आपको अगर आपकी जो टक्कर है वो आरसीबी के साथ है, आपकी जो टक्कर है पीबीकेएस के साथ है, आपकी जो टक्कर है जीटी और एमआई, जीटी खास करके जीटी के साथ है, ये आपको करना है। और ये आरआर को ये ध्यान रखना है कि ये जो हो गया एक बार इसे भूल जाना है। और वन वर्ड फॉर रियान पराग, ही ब्रिंग हिमसेल्फ ऑन एज अ बॉलर, आई थिंक एट द एब्सोल्युटली राइट टाइम। कल भी 1 ओवर डाला, 5 रन दिए, 1 विकेट लिया। और ये जो अपने आप को इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है ना, ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही एक चतुर और एक विजडम लगता है, एक जजमेंट लगता है, अब आऊं कब डालूं। तो मुझे लगता है ये जो इनकी एक क्वालिटी है, ये बहुत ही हेल्प होती है। जो अगर आप मेरे फेवरेट बॉलर की बात करूं, शार्दुल ठाकुर की, उसको भी जो कप्तान को यूज करना चाहिए ना, ऐसे 1 ओवर डाल दे, फिर 2-3 ओवर मत डालो, फिर 1 ओवर डाली को, ये इनकी जो क्षमता है वो उनके ऑडिटी में है, उनके एक स्ट्रेंजनेस में, उनके एक अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी में है, ना कि उनके कोई स्किल में है, ना कि कोई स्विंग करते हैं या स्पिन कर ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक ऐसा एक अननोन ऑड बॉल आ जाता है जिसमें बल्लेबाज मार खा जाता है और आउट हो जाता है। तो ये जो चेंज बॉलर वाला जो किस्सा है, किसी कोई बॉलर को सूट होता है, तो फुल मार्क्स टू रियान पराग एज अ कैप्टन for bringing himself on as a bowler and getting that 1 wicket and then keeping away। नहीं कि मैंने 1 विकेट लिया तो और तीन ओवर डालता हूँ क्योंकि मैंने विकेट लिया और मैं बहुत बढ़िया बॉलर हूँ, ऐसा नहीं सोचा उसने अपना काम किया और चला गया। तो that is a good word I want to put in for him. Otherwise, I think bad batting, nothing you cannot say anything about the batting. So I think it was a aberration, odd day. Forget about it. Go forward, play your normal match. You are going to be there right at the top. Naren sir, you were going to tell us something about the two debutants. Yeah, I will tell that. But before that, I would like to add that Yashasvi Jaiswal was he took the first run and he was on the other end. He saw all the 3 wickets falling. उसके बाद में भी उन्होंने वो ऐसा शॉट लगाया जिसमें वो आउट हुए, जबकि वो आराम से, जब टीम के 1 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं और आप यशस्वी है, नाम में ही आपका यशस्वी है देखा जाए तो आपको उस टाइम थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने आप को ये टीम को आगे बढ़ाना चाहिए, ये अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाना चाहिए था। सो इनफैक्ट मैं उनके शॉट को सबसे रेकलेस शॉट मानता हूँ पूरे मैच का। हालांकि निखिल बाबू ने कहा कि शॉट्स के कारण आउट हुई है, बॉलिंग इतनी फर्स्ट क्लास बॉलिंग नहीं थी कि जैसे विकेट गिर सकते हैं, लेकिन उनका जो शॉट था और वो सिचुएशन के अंदर, जबकि कोई मारने की जरूरत नहीं, कहा आपने को छक्के मारने की जरूरत नहीं। That is not excusable. हाँ, सो दैट इज वन थिंग व्हिच आई फील। और उन्होंने भी डॉट बॉल 4 खेल ली थी तब तक, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसा नहीं है कि 4 डॉट बॉल रही तो 5वें मेरे को छक्का ही मारना है, इट डज नॉट वर्क दैट वे। Not when you're 3 down. हाँ, 3 डाउन, दैट वाज बोथ। और आपने आपके आंख के सामने बॉलिंग देखी है अपना हिंगे की, जो हिंगे कैसे विकेट ले रहा है ना, तो उसके बाद में जब आपको भी बॉलिंग, और आपने भी 3 बॉल खेल लिए थे हुसैन के, उसके बाद में आपने वो शॉट मारा। सो somehow or the other मेरे को लगता है कि एक्चुअली दैट वाज अ मैसिव लेट डाउन फ्रॉम द टीम्स प्रीमियर बैटर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट वाज वन थिंग। कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ दिस
टॉप परफॉर्मर्स ऑफ किया था फॉर अ बेस प्राइस ऑफ 20 lakhs, लेकिन उसको पूरे बेंच पे रखा, पूरे टूर्नामेंट में उनको मैच नहीं खिलाया। अच्छा, 25 में ही वॉज अनसोल्ड, नो बडी पिक्ड हिम अप। माय गॉड। 26 में उसके बाद में ही बिकेम अ नेट बॉलर फॉर सीएसके। उश। सीएसके को टॉप साइज सबको उन्होंने एलाइट बैटर सबको बॉलिंग करी है एक्चुअली। देन कम्स हिज गुड लक, एसआरएच ने आईपीएल 26 में इनको पिकअप किया 30 लाख के बेस क्या बात। कॉस्ट पे, and rest you say it's history or rag or riches to history, you know, from being a net bowler going unsold, getting his chance with SRH, producing one of the most memorable debut bowling spells in IPL history. ये हो गई साकिब हुसैन की। when you compare for प्रफुल्ल हिंगे, एक very quite different from साकिब, you know, SRH के लिए उनका ये फर्स्ट आईपीएल फ्रेंचाइजी है, उनको कोई प्रायर आईपीएल हिस्ट्री का कोई कहीं पे भी कोई हिस्ट्री नहीं रही है उनकी। He gave trials for SRH, Mumbai Indians and Gujarat Titans for this 2026. Oh my God. SRH ने उनको 30 लाख में अब की बार उठाया, so he was not bought by any previous franchisee and very limited T20 experience. मुझे ये पता चला है कि इसके पहले उन्होंने एक ही T20 आंध्र प्रदेश के सामने खेला, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए खाली, ही प्लेस फॉर विदर्भ, तो उन्होंने उसके अंदर खेला, वहां उन्होंने 23 रन देख के 1 विकेट लिए, यू नो। सो essentially yesterday's match was his second ever T20 match देखा जाए। Wow. And and उनकी roots of training you know is in Nagpur, he belongs to Nagpur देखा जाए तो। Initially he was a batter, but his father insisted that he should start fast bowling because of his height and his power actually. So then that decision shaped his career actually. So that was as far as both the debutants are concerned, and their for people who did not watch the match yesterday, want to more about the records, you know. So Praful Inge became the first bowler in IPL history to take 3 wickets in his maiden over. Number one, he told, as Hitvi said, he told his friends that he would get Vaibhav Harivanshi with a bouncer, and then he got him, Vaibhav Suryavanshi. Then, of course, he took Durrell and Praful in the same over. First time in history that 3 wickets have fallen in the first over an IPL innings. कभी एक IPL के इनिंग में पहले ओवर में कभी भी 3 विकेट नहीं गिरी है. And then he came in the third over and took Riyan Parag's wicket also. And first bowler to take 4 wicket haul within the first 3 overs in IPL innings, surpassing the previous best of Ishant Sharma of 2011. मतलब आज से 15 साल पुरानी है. And as far as Sakib is concerned, you know, on his debut, he dismissed Jaiswal, Ferreira, Archer, and Bishnoi to take again 4 for 24. और उनका average is only 6 per over. वो भी for a debutant, it's a record actually. इसने 4 ओवर पूरे डाले हैं actually. So उन्होंने भी मैच के बाद कहा कि every player wishes for a debut like this. It feels very nice. Adding that his bowling coach has informed him one day in advance that he'll be playing that match. And together they have set this record. आपका actually 10 की 10 विकेट्स पेसर्स को गई है ना, 4-4-8 और मलिंगा ने 2 ली है actually. So correct me if I'm wrong, but the one of the record is that first over में 3 wickets have fallen first time. Yes. For the From first a time. debutant. From a debutant. Okay. So yesterday we had the most entertaining of cricket matches. We saw good bowling, we saw good batting as well. We saw people, teammates stepping up at the right time. Had Ravindra Jadeja and Donovan Ferreira did not play the way they did with the maturity they showed yesterday, Rajasthan would not have gone to 159. They did not play under pressure. They did not play recklessly, and that's a learning you take away with this. That was our review of SRH versus Rajasthan Royals. If you enjoyed this breakdown, hit the like button, subscribe to our channel, and drop your favorite moment of the match. Was it Ishan Kishan? Was it Klaasen? Was it the wicket taker, Hinge, or the other debutant that we heard about? Tell us what you think, and we'll see you in the next preview. KKR versus CSK, the fight between the bottoms. So one thing I would like to add at the end is SOPs don't work always. You have to think out of box, you know.
That is to add to what Nikhil said actually, So आप एक SOP बना दिया, उस पे ही चलो भाई, फील्डिंग करना ही है, बैटिंग नहीं करना है पहले, और इसको नहीं देना है ओपनर को. जैसे ईशान किशन ने 2 डेब्यूटेंट को फर्स्ट 2 ओवर्स दिए, दैट वाज आउट ऑफ बॉक्स, unheard of and out of box thinking, and both performed actually, so Great. That's good. See you at the previews. Thank you. आओ देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलेगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है. आओ देखे क्रिकेट